Assalamu alaikum students. We are here again to continue our sessions, and this time we'll be starting with history. We had left in our last lecture where we studied the economics, and we were studying the portion of economy of Delhi Sultanate. Though we do not need to study in detail, but we need to have a general concept about their economic system, because in UPSC or JKPSC you will be asked a general question about the economic system. Well, how well was it prosperous? But why? Excuse me. While you study this economic prospects or economy of Delhi Sultanate, one of the important questions that comes to our mind, that when we say that it was primarily an urban economy, then there must have been certain important features associated with that economy which would have turned hitherto or previously agrarian economy to urban economy, because this is first time after Primorian times, where after first urbanization in Delhi, this Harappan period, the second urbanization. Now we saw the things that were already in ancient India. We saw that they were primarily agrarian in nature, or rural economy was dominant. But here again we are seeing one important thing, that is urban economics again became dominant. Now, what were the features, and what features we have already discussed those features. But today, what I want to take you through, that are the rulers of Delhi Sultanate made important contributions for the first time in India, in Indian subcontinent. This makes these topics as especially important for your preliminary examinations. We'll be covering this part, then we'll be seeing further what kind of things what were the other things that we have to study. Now, topic would be same, economy of Delhi Sultanate continued. जब मैं बात करूंगा इनके फीचर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, मैं वहाँ इस बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि इन्होंने क्या क्या दिल्ली सल्तनत वालों ने, दिल्ली सुल्तान ने यहाँ नया इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ, वेयर, इन इंडिया. तो उस चीज़ को आप एम्फेसिस कर खुद ही समझ लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है. बट क्वेश्चन आई एम फ्रेमिंग हियर इज continuation of economy of Delhi Sultanate. So far we have seen their agriculture and introduction, what invention they made to the agriculture in India, or what system of irrigation they introduced to India. If you recollect it properly, it was Sakya system, Agara Hat or Rahat system that was already in place, but that was modified during their tenure. But it was Sakya system that was introduced by them for the first time. ठीक? Now, we'll go to important other aspect of their urban economy, that's textile. And textile economy, we have to study this textile technology or textile production in detail. अगर टेक्सटाइल को हम पढ़ेंगे तो आप यहाँ ध्यान देंगे, एक तो वो हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ फैब्रिक्स का इस्तेमाल होता था. कौन कौन सा? कॉटन, हाँ, सिल्क,
there were two prominent fabrics that were used. As raw silk was especially important in the part of Bengal. जो raw silk यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता था चाइना, वहाँ से फिर वो प्रोसेस हुआ करता। ऐसे ही कॉटन गुजरात के पोर्ट से कहाँ जाता था, वेस्ट एशिया की तरफ जाता था एक्सपोर्ट। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कॉटन का एक किस्म जिसको हम मसलिन कहते हैं, मसलिन कहते हैं, ठीक। Not but important is here why it became textile industry क्यों flourishing stage पे चली गई in Delhi Sultanate की तरफ, because they made some important they introduced some important technologies जो आज भी यूज होती है, ठीक है। वो क्या थी? Now इस टेक्सटाइल में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, they introduced in India क्या क्या इस्तेमाल किया? स्पिनिंग व्हील, चरखा। Charkha was introduced to India for the first time by Delhi Sultans, ठीक। और चरखा, we find the first reference of चरखा in a book known as Futuh Salatin, not important, but this gives us important reference of charkha or spinning wheel. This increased the weaving और कॉटन जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन थी उससे अब वो प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट होना शुरू हो गई, ठीक। हाँ, और ये 6 times more yarn प्रोड्यूस कर सकता था और अच्छी क्वालिटी का। They also introduced pitloom, ठीक। क्या इन्होंने किया? pitloom। अब इसमें क्या हो गया? देखो, जब इन्होंने pitloom भी किया इंट्रोड्यूस, स्पिनिंग व्हील भी इंट्रोड्यूस किया, इससे क्या हो गया? और कॉर्डर्स बो, they introduces कॉर्डर्स, कॉटन जिसको कहते हैं, देखा है इसके पास जो बिस्तर बनाता है दुनिया, ठीक है। कॉटन कॉर्डर। जब अब तीनों गिनिंग भी हो गई और कार्डिंग भी हो गई और स्पिनिंग, इन तीनों में अब एडवांसमेंट आ गई, ठीक है। तीनों पोर्शंस में अब क्या आ गई? एडवांसमेंट। इसमें क्या आ गई? किसमें भी? गिनिंग में भी, कार्डिंग में भी और वीविंग में भी, इसमें अब एडवांसमेंट आ गई कि नहीं? No. What will it lead to? गिनिंग होते ना जो कार्ड को अलग अलग करना पहले, ठीक है। तो कार्डिंग, फिर उसको पूरी तरह से उस तो आपने देखा होगा ना कार्ड, जब आपने देखा होगा बिस्तर के वाले के पास वो करता है ना पहले अलग अलग सबको, फिर वो उसको दुनिया में डालता है, ऐसे ऐसे निकालता है थोड़ा। फिर हम कॉटन, जब वो घर में आपने चरखा देखा होगा एटलीस्ट, फिर हम उसको वीव करते हैं, उससे थ्रेड निकालते हैं, फिर उससे टेक्सटाइल यूज करते हैं। तो जब ये एडवांसमेंट हो गई फिर क्या करता है? फिर क्या हो गई? इंक्रीज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक। और जब इंक्रीज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। कॉटन का एक्सपोर्ट क्या होगा? दूसरा चीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, इसी में आप दूसरा चीज हम पढ़ेंगे। ये मेरा आप करो,
दूसरी चीज इन्होंने क्या की, एक तो इंट्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स का किया, दूसरा किया कि द एडवांसमेंट किस में हो गया, इन डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग के लिए कौन सा डाई यूज किया जाता था, इंडिगो, ठीक है। अब उसमें ज्यादा तौर पर वो ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और इंडियन डायर को क्या कहते हैं, रंगरेज, क्या कहते हैं। और इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग भी स्टार्ट की थी, मीन्स अब जो टेक्सटाइल को अब वो वहां से प्रिंटेड टेक्सटाइल्स हमारे पास आ सकती थी, ब्लॉक प्रिंटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, इंडिया में। आया समझ। प्रिंटिंग में देखो, अगर आपको आपने कोई ब्लॉग बनाया है, फिर उससे छापना, तो उस पर आपने किया है ऑलरेडी प्रिंट एक एस्टैब्लिश, हाँ ठीक है, तो फिर हो गया ये हम इस। और दूसरी चीज एडवांसमेंट इन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई इन्हीं के ज़माने में। तो मैं आप तीनों चीज मैं आपको दे रहा हूँ पर्सपेक्टिव कि क्या कल को आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि दिल्ली सुल्तानत के वक्त कौन चीज फ्लोरिशिंग स्टेज पे थी और किस वजह से थी, ठीक। तो अब तीसरे के एडवांसमेंट इन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग। क्यों अब सर आप बोलेंगे कि सर कौन सी एडवांसमेंट हो गई, हमें बता दीजिए क्या एडवांसमेंट हो गई। जो सेरिकल्चर था ना, दैट इज रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स ऑन मलबरी ट्री, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था यहाँ, सेरिकल्चर, they introduced silk, and it was first heard of Bengal in the 15th century and Kashmir in the end of 16th century. वो दो prominent centers क्या कहते हैं फिर, बंगाल और कश्मीर। बंगाल में 15th century और कश्मीर में 16th century। और जो यहाँ एडवांसमेंट हो गई टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, दिस वाज कैरीड फॉरवर्ड ड्यूरिंग मुगल एरा, एंड वेयर you have to study about the karkhanas, the pattern of their working and their production, how did they steep up the production methods, or how did they steep up the production process. तो वो तो आपको पढ़ना है, but that you have to study during the time of Mughals, because this technology was carried forward by Mughals themselves, ठीक। This was all about textile technology, huh? We are studying about urban crafts, isn't it? We studied about agrarian part. Now we are studying about other aspects of urban economy or urban crafts that were prevalent during this time. And while studying these urban crafts or urban sources of economy, we are also studying why did they advance? Why did they get advanced? Because Delhi Sultan made some important introductions during their time period. ठीक? Now, let's move further. What about paper making? And book binding. What do you think? पेपर मेकिंग कहाँ सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट हुआ था, आप हाँ, चाइना। स्टार्टेड पेपर, देखो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, पेपर मेकिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द दिल्ली सल्तनत, नो,
इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय चाइना। और किस सेंचुरी में? अराउंड फर्स्ट सेंचुरी में। कब? देन अराउंड 7th सेंचुरी ये इसकी नॉलेज किसके पास पहुंची? अरब्स के पास। हाँ, 7th सेंचुरी के आसपास ये किसके पास पहुंची इसकी इंफॉर्मेशन? और फिर दिल्ली सुल्तान ने इसको पेपर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। दिल्ली सुल्तान, ठीक है। क्या इससे पहले पेपर नहीं थे? थे, बट दे वर नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग। दूसरी चीज, जब चाइनीज ट्रैवलर इस सिंह यहां आया था तो उसको वापस भेजना पड़ा अपना एक साथी चाइना से पेपर लाने के लिए, बिकॉज उसके जो यहाँ लिखाई कर रहा था उसके पेपर्स खत्म हुए थे। वो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय दिल्ली सुल्तान। एंड इसका पेपर का यूज फिर बहुत ही ज़्यादा बुक्स के लिए हो गया, हिस्ट्रीज के लिए, फॉर्मान्स के लिए, न्यूमरस यूज। फिर इंडिया में कमर्शियल लेवल पे भी यूज होना स्टार्ट हो गया। कौन? पेपर मेकिंग। सिमिलरली बुक बाइंडिंग। हाँ, ठीक। नाउ लीव दिस इकोनॉमिक पार्ट। ये तो इकोनॉमी में ही आते ये चीज। अब पेपर मेकिंग आप इकोनॉमी में लिखोगे ना लिखोगे वो ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें ट्रेड पढ़ा, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी पढ़ा, तो इकोनॉमी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम जहां हमें, क्योंकि ये इकोनॉमी में ही ये चीजें आ रही थी, तो मैं अगर हम अलग से भी ये पढ़ेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दीज आर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तान। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ इसी का कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूएशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। बिकॉज ये आपके प्रिलिमिनरी के लिए क्वेश्चन यहां से उठा सकते हैं। हाँ, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग विल स्टडी अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। व्हाट? हालांकि हमने आर्ट फॉर्म अभी नहीं पढ़ा इसका, मगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम वो परसों पढ़ेंगे, परसों के लेक्चर में। तो मगर आज हम देखेंगे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था। पहला ही इन्होंने किया था लाइम मोटार, पहला जिसका यूज वाइड स्केल पे हो गया। दैट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। किस चीज का? लाइम मोटार, ठीक है। ट्रेडिशनली इंडिया में किस चीज का इस्तेमाल हुआ करता था? क्ले का, स्टोन्स का, मड का, हाँ, और वुड का और ब्रिक्स का बहुत ओकेजनल यूज हुआ करता था, ठीक। और उस बाइंडिंग कैपेसिटी उसी जैसी है। दूसरा चीज जो इन्होंने किया था, दैट वाज ट्रू आर्क एंड डोम वाटर प्रूफिंग। ट्रू आर्क एंड डोम स्ट्रक्चर। ठीक। चूंकि आर्क
या डोम के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि नहीं? आर्क या डोम के लिए ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट, और ब्रिक्स पूरी तरह से बाइंड होनी चाहिए। जब इन्होंने लाइम मोटर आप इस्तेमाल किया, वो मीन्स आप ये आर्क भी अच्छे से बना सकते थे और डोम भी अच्छे से बना सकते थे। ठीक है, और गुंबद, गुंबद मीन्स डोम, डोम तो आपको पता ही है, वॉल्टेड सीलिंग और डोम को ट्रू आर्क एंड डोम स्ट्रक्चर किन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम? हाँ, ट्रू और they introduced it. What now? Question would remain: what changes took place during Mughal period? That is what when we study, when we make the comparative analysis of both. Until and unless we make comparative analysis of both, our preparation will always be half-hearted, or it would be incomplete. But I would make my utmost effort to make you understand while we study architecture of Delhi Sultanate, वहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत इस बारे में इसकी तरफ दिमाग फेर दूँ, ठीक है, थोड़ा वहाँ की तरफ ले लूँ। नाउ इसके बाद जो ये हो गया बी, दिस इज ऑल अबाउट प्रिलिमिनरी लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अगर हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप मुझे बता दीजिए कि इनने क्या मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ खास किया। पहला चीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज आयरन स्टिरअप। Iron stirrup was unknown in India. वो है ना, वो नीचे लगाते हैं, बोर्ड को लगाते हैं ना पैरों में ना, ठीक है। ना उसको बोलते हैं हॉर्स शू, उसको बोलते हैं हॉर्स शू। आयरन स्टिरअप किसको कहते हैं? तो ये देख लेंगे हम आयरन स्टिरअप किसको कहते हैं। आपको क्या लगता है आयरन स्टिरअप? वो जो ना यहाँ लगा होता है, वो उसको बना होता है ना इसका, आयरन का, ठीक है। वो इससे पहले, उससे क्या होता है, इससे उनकी स्पीड फास्ट हो गई। क्या हो गई? फास्ट हो गई। दूसरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हॉर्स शू। अब हॉर्स शू से क्या हो गया, हम इसके बाद देखेंगे, तो आप ध्यान दीजिए पहले। हॉर्स शू से क्या हो गया? हॉर्स शू से एक तो इनकी स्पीड बढ़ गई, दूसरा अगर अब रफ पैच भी हुआ करता था वहां से भी ये भाग सकते, ठीक। नाउ व्हाट अबाउट गन पाउडर? इस पे यहाँ यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। गन पाउडर सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी चाइना में, ठीक। और दिल्ली सुल्तान ने इसको इंट्रोड्यूस किया, किसने? दिल्ली सुल्तान ने इसको इंट्रोड्यूस किया कहाँ? इंडिया में। बट स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत दिस वाज ओनली यूज्ड टू मेक फायरवर्क्स, not firearms. Gunpowder was still used to make fireworks, आतिशबाजी, not firearms. अभी हम इससे कोई ammunition नहीं बना रहे थे। And first time it was
it was used for fireworks by Portuguese. Portuguese, and Babur also popularized its use. The first time it was already used in India, but not as a fireworks, but it was used as fire. It was used for fireworks, not for firearms, and it was used. It was Portuguese used it to make to used it for firearms, and its use was also popularized in India by Babur in use of firearms, and that became one of the important things that helped him to in his success during first battle of Panipat. तो यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछा गया कि गन पाउडर was first time used during the period of Babur, but ऐसा नहीं है. It was used, but it was used for firearms was popularized by Babur, but it's first time used for firearms by Portuguese, but used for fireworks by Delhi Sultanate. And Delhi Sultans were the ones who introduced. इतना आप बुक्स पे नहीं पढ़ सकते, इस लेवल पे आप बुक्स पे नहीं पढ़ सकते, इतना आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आपको फिर 4-5 बुक्स पढ़नी पड़ेगी इतनी कंपैरेटिव डेप्थ पाने के लिए. और यूपीएससी का सवाल वही थीम पे पूछा जाता है, वो एक पर्टिकुलर बुक से नहीं उठाया जाता है, वो थीम बेस्ड क्वेश्चन होता है. क्या होता है, इसलिए आपको हिस्ट्री में गाइडेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और जब ऑप्शनल आप अगर यूपीएससी के लेवल की तरफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जब तक जो आपको मेंटर होगा, जो आपका टीचर होगा, उस पर हिस्ट्री पे 2-3 एटलीस्ट 2-3 बुक्स पे फोकस, उससे वो अच्छे से वेल रिवाइज्ड पढ़ी हुई होनी चाहिए, फिर जाके आपको ये सवाल, फिर सॉफ्टवेयर कंसेप्ट आपको यूज किए जा सकते हैं. नाउ अदर इम्पोर्टेंस अबाउट टिन कोटिंग. टिन कोटिंग मीन्स कश्मीरी में कलाई करना. ठीक, टिन कोटिंग को भी दिस क्राफ्ट ऑल्सो केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सब. और इसका जिक्र फिर मुगल पीरियड में अबुल फजल की जो किताब है आईने अकबरी, उसमें भी इस्तेमाल किया गया है. ठीक, हाँ. और मैरिनर कंपस भी पॉपुलर किया किन्होंने यहाँ यूज करना. ठीक, this was a magnetic compass. It was a great contribution which the Muslims diffused in India. These sultans diffused it. These are some of the important technologies which we came across today, who were brought down by Muslim Turks or Delhi sultans from their land, from their where they used from different areas into India, and they popularized their use, which helped various dynasties or various kingdoms or various empires afterwards to develop and progressive step after that. ठीक है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को वहीं से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और वहीं से यूज करना फिर स्टार्ट हो गया. अब हमने ये इंट्रोडक्शंस भी देखी. अब आपके लिए जो कल सवाल रहेगा, that would be what about the social structure of Delhi Sultanate. आप मुझे आइडिया आप वहीं से बता देंगे. मुझे कल आपको वो पढ़ाना नहीं पढ़ना चाहिए. I should not teach you tomorrow. Rather, you should teach me tomorrow what were the conditions, what were the social developments during their period, or what were social conditions that were present during their period. उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक व्यू पॉइंट हो जाएगा. फिर आप एंशिएंट टू मॉडर्न तक इंडिया की सोसाइटी को, चूंकि हमने अभी स्टेप वाइज वो देखा है किस पार्ट में क्या हो गया, फिर आप लिंक कर सकते हैं. ठीक है, किस पीरियड में क्या कौन सी डेवलपमेंट हुई, क्या डेवलपमेंट हो रही थी. ठीक है, उसमें
और मैं कोशिश करूँगा इस दिल्ली सल्तनत को आर्ट एंड कल्चर टॉपिक के से ही मैं वाइंड अप करूँ, फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे विजयनगर और बहमानी किंगडम में, देन विल मूव टू Mughals. And this would be all for today. But keep your assignment in mind. I will be strictly asking questions. I will be not preparing lecture for tomorrow in history. You will have to prepare that lecture. I'll be asking a question. I'll deliberate on your points here. Okay? This is all for today. Thank you so much.